and the car has left the meeting. The recording has started. Chat message and call me. Your microphone is on. Dear learners, welcome to today's session. So, fortunately, for the long journey, today is the last session of your MA second year program. So, we have already covered MSO E1, MSO E2, MSO E3, MSO E4, and today is the MSO E3 last class. So, I must thankful to Dr. Birendra Sona. I mean, after his busy schedule, he's very busy. After that, also, he had given so much of time to IGNOU, Indira Gandhi National Open University. So, he is interested to take another 2 extra class also. Because in all the programs, you are giving only 8 class. But in this MSO 3 paper, you are giving you 10 class. So, I do feel all students, our learners, will enjoy this online session. So, now we are planning to have a develop one questionnaire and I will send it to you. How do you feel about this online counseling class? You will continue this in future or what? I mean, through this lockdown, this is also because this is a new things for us. Before to this, you never started any online counseling classes. Purely you are based upon the offline only. Because in any system, the face-to-face interaction is put much more important. But still, due to this pandemic, we all are locked down in home. It's not possible to come to the any educational institution because government of India and government of Odisha both they have closed down in all the educational institution. So we feel that this is the better opportunity. This is the nice opportunity you got it to link through our learners. No doubt in distance education our learners are very matured. For us it's not very tough to join with our learners. So very soon now we are going to start BA Sociology class also. So with these words, once again I thanks to Birendra Sona sir. I welcome today's session. So learners, please kindly put your mic in the mute mode and also write your enrollment number and name in the chat box. Thank you very much learners for your presence hearing. And once again I welcome to Birendra sir. Sir, I hand over the session to you today, sir. I welcome you today's session, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. And good evening, learners. Today we are going to discuss about the unit 17, which is about Canada. Why in sociology of development, why Canada, Brazil or South Africa is connected? Because we have some economic relation, we have some social relation, we have some cultural relations with this big country. So, as you know, this Canada is the second largest country, and it has a huge geographical area, and it has যদি ଆମେ ଦେଖିବା geographical area ତାର mountains ଅଛି, Rocky Mountains, ତାପରେ ଅଛି blue Pacific Ocean ଅଛି, ତାପରେ west coast ରେ, ତାପରେ it has a beautiful lakes and the magnificent Niagara Falls Canada ରେ ଅଛି. ଯୋଉ Niagara Falls ଆମେ ଯୋଉ ସିନେମା ରେ ବା ଫଟୋ ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, the Niagara Falls is in Canada, central Canada ରେ ଅଛି. Moreover, Canada ହଉଛି ଗୋଟେ largest country in the western hemisphere ଏବଂ यार geographical area होची 997061 square kilometers and it has a huge coastline. यार जो coastline अछि जेमिति हमरो ओडिसा रो जेमिति coastline अछि Canada रो मैदा huge coastline अछि कि coastline cover करछि 244,000 kilometer as well. Canada economy होची गोटे wealthy economy तारो इकोनॉमिक कंडीशन ता सब बहुत भलो एवं यूनाइटेड नेशन ए कंट्री को अनेक समय रे कोन नंबर 1 रैंक भी करिछि एंड एटा को कहा जाउछि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन. कनाडा रे हम इंडियंस बहुत अछंती कोन पई ना कनाडा रे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम तार कोन कहबा क्राइम जोटा कि जेमिति कि यूएसए रे देखा जाय सेमिति कनाडा रे सेटा नाही. आउ यार एनवायरनमेंट बहुत क्लीन तो सेति पई रेकमेंड करा जाय दैट if any country have to be live for some time it is Canada. Then Canada रे रहिबा पई मतलब जो वीजा प्रोसेस अछि सेटा टिके अन्य कंट्री अपेक्षा टिके बहुत इजी. कनाडा होछि जदि 2004 रो हमरो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे देखिबा
Canada hochi fourth largest fourth in the world as per human development. Behind only to Norway, Sweden and Australia, Canada the 8th largest trading nation in the world. So जानिछे हमें जे नॉर्वे होची सब बेले टॉप रे रुहे ए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे तापर स्वीडन तापर ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा होची 8th लार्जेस्ट नेशन कोथि पई ना ट्रेडिंग पई यार ट्रेड सिस्टम ता बहुत भलो जोथि पई कि अनेक समय रे हेल्प हुए कोन इकोनॉमिक बूस्ट अप पई तापर एठी यार जो इन्फ्लेशन रेट सब बेले पई लो रुहे. It is not only an active foreign investor on the global front, but also receives a high degree of foreign investment for all over the world. So, ये country रे अनेक लोग invest करिया पाई भी चाहती एवं यारो foreign returns बा कौन कहवा international level रे तार trade करिया मध्य बहुत भलो सब बोल पाई. कनाडा को prefer करंती अनेक लोग जीवा पाई Canadian citizenship पाइवा पाई मध्य किसी ता easy थाई बोली कहा जाए. तारो population को देखिवा एठी देखिवा जे how Canada has become so economically strong. Economically ये sound केमिति हला यारो wealth ता केमिति से create कला एठी हमें देखिवा precisely देखिवा not elaborately, we will see precisely. Economic history of Canada. The Canada is a single economic unit, but they begin with the following section. We will view the economic background of Canada by region wise मध्ये हमें देखिवा किंतु हमें देखिवा सेंट्रल कनाडा रे जदि देखिवा ना कोन होची ना the most of the native people were hunters and gatherers and agriculture was practiced by very small number of European groups. There was no specialized merchant class but trading was common. एई सब 16th century रे कोन हेतला ना फ्रेंच और ब्रिटिश अराइव करिथिले and a great deal of economic and cultural change occurred among the native people. ये जो native people अछंती central जो in fact सब country hunter gatherers देखा जानती food gatherers देखा जानती तो एठी मध्य थिले तो कनाडा रे मध्य थिले तो फ्रेंच जेतबळे गले बा ब्रिटिश जेतबळे गले so they have what they did is that economic and cultural changes has been occurred. Economic एवं cultural change देखिबा को मिलिथिला माने हमरो इकोनॉमी सेक्टर हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर अनेक most of the central Canadian industry including the country's two great industries milling and lumbering was dispersed through the countryside or in small village even in 1871 and afterwards due to rapid industrialization urbanization. So प्रत्येक कंट्री जो डेवलप कंट्री हमें देखु छे तांकर इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रो परिवार मेन कारण होची तांकर इंडस्ट्रियलाइजेशन ता बहुत फास्ट हेतिला बहुत परिमाण रे कोन रैपिड इंडस्ट्री करथिले एवं लोक रूरल छाडी के अर्बन आड़ को बहुत परिमाण रे माइग्रेट करथिले तो अर्बनाइजेशन मध्य बहुत परिमाण रे बढ़िथिला कोकी ना दिस इज इन द सेंट्रल कनाडा रे अटलांटिक एरिया रे हमें कोन देखु छे ना कनाडा रो ना जेहेतु सी फिशरी brought about a major economic development in the Atlantic region. So Atlantic region जोटा अछि कनाडा रो से रीजन रे हमें देखु छे ना जो फिशरी सिस्टम अछि माछ मारिवा जो चाष तांकर अछि it has also brought lots of economic and economic क्षेत्र रे इठी डेवलपमेंट देखा को मिलिथिला. तो ए जो 1920 और 1930 रे सबु देश रे जो डिप्रेशन ता ग्रेट डिप्रेशन हेतिला डिप्रेशन ग्रेट डिप्रेशन माने इकोनॉमिकली फाइनेंशियली सबु देश हमपर हेतिले फॉर एग्जांपल आजिर डायरेक्ट जेमिति कि कोविड 19 जो मेनी कंट्रीज रे समस्त वर्ल्ड रो इकोनॉमी ता पूरा कोन हेछि गोटे टाइप का इम्बैलेंस हे जाय तो सेमिति 1920 और 1930 रे मध्ये यूरिया हेतिला. So the few rays of hope include the new pulp and paper plants or new protected markets for apples and lumbers in Britain. So, हम देखिले जो वर्ल्ड वॉर सेकंड for a hectic prosperity to those communities which serve the naval and air base and after 1945 the situation improved. So the world war second पर सब कंट्री गुडा को किछि परिमाण रे के इंप्रूव करि गले एवं सेठु ए जो अटलांटिक रो कनाडा जो अछि अटलांटिक ओशन साइड जो रीजन ता रहि जाय से रीजन रे
अनेक गुड़ाए फिशरी कंपनी माछ धरिया माछ चाष करिया कंपनी गुड़ा मध्य देखा जायतिला वेस्टर्न साइड रे कोन देखा जायतिला कनाडा रो ना वेस्टर्न रे होशी कोन ना ट्रेड वाज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइड ट्रेडिंग करिया इन द लेट 1890s the prospect for development brightened as world price rose, transport costs fell, method of dry land farming improved, and more appropriate varieties of wheat become available. जो गहम चाषटा नुआ भराइटी गहम चाष कौन वेस्टर्न साइड रे देखिया मिलता एवं एटार प्राइस बहुत भल थिला जोटा कि सेमाने विदेश को रप्तानी करुथिले एवं बाय व्हिच दे आर गेटिंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स जो जो द्वारा कि तांकर ए जो वेस्टर्न साइड रे इकोनॉमी का भल हेतिला वेस्टर्न साइड रे आउ मध्ये देखा जायतिला ना तो कोन नुआ प्रोजेक्ट सब आसिला ऑयल गैस पाइपलाइन बिल्डिंग और पोटास ए सब तयारी करिवार मध्ये से सब जगह रे से सब साइड रे बहुत हेल्प हेतिला सो ए होची कनाडा रो कोन इकोनॉमी कोन कहबा हिस्ट्री तार तीन ता रीजन को नहीं कि होची तो कनाडा रो मु आ से इकोनॉमी व्यू को जाउने मु एठी जोटा इंपोर्टेंस मु देखुथिली हमर जो प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन गुडा को क्वेश्चन गुडा को बहुत इंपोर्टेंट एवं क्वेश्चन गुडा को माने हमें लेखिया थिला सेटा हमें एठी देखिबा एठी हमें देखिबा इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म का केमिति हेतिला हमें जानिछे नेशनलिज्म तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को भली आकर हेतिला ए कनाडा रे एवं एटा तांकर इकोनॉमी को केमिति आगे नेबा पय हेल्पफुल हेतिला The movement of economic nationalism in Canada was aimed at achieving greater control by Canadians of their own economy. जो कैनेडियन माने अछंती जो माने कि सेठी कार कोन कहबा नेटिव सेही माने इकोनॉमी टाको निज हाथ रे कंट्रोल करिया पई माने चेष्टा कले एवं से सेठी पई इकोनॉमिक नेशनलिज्म का आरंभ होइतिला the movement which was a result of the foreign control of Canadian economy had two main separate areas of concern. So एठी दुईटा हमें देखिबा एस्पेक्ट जोथि पई कि माने इकोनॉमिक नेशनलिज्म रो कथा हेले गोटे होची प्रोटेक्शनिज्म इन ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म माने जो माने प्रोटेक्ट करंती ट्रेड को प्रोटेक्ट करिवा निजरो इकोनॉमी को बा निजरो एरिया को बा निजरो कल्चर को प्रोटेक्ट करिवा ताको प्रोटेक्शनिज्म बोली कहला जाय तो एठी ट्रेड को से माने कोन कहबे प्रोटेक्ट करिया पई चाहिले तो it was in fact a consequence of national policy of 1879 which was to encourage the creation of an industrial base of Canada by protecting small industry against the competition of large and more established farms. एबे हम बुझी पछे ना जेते सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कनाडा रे थिला ताकू एमाने प्रोटेक्ट करिया को बसिले जेमिति कि आम देश रे मध्य वर्तमान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अछि से गुडा को जेमिति प्रोटेक्ट करिवा ताले कोन हबो ना हुए तो आमर इकोनॉमी मध्य बहुत बूस्ट अप हे परिबो तो एग्जैक्टली सही जिनिसटा कनाडा रे देखा जायतिला 1879 में बहुत वर्ष पूर्व तो हमें कोन देखु छे ना सेठी से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो गुडा को कि लाइक फ्रूट जूस मेकिंग और फिशिंग और किमति कहया लाइक वीट हला ए सब जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ताकू से माने बहुत इंपोर्टेंट देले सिमिलरली प्रोटेक्शनिज्म in trade was to establish a system of tariff to favor domestic production of goods and discourage imports से कोन चाहुथिले ना इंपोर्ट करिया पई आमदानी करिवा को सेतेटा इंपोर्टेंट न देई कि एक्सपोर्ट करिवा बा रप्तानी करिया को बहुत इंपोर्टेंट दउथिले एवं जो टैरिफ हबो जो टैक्स सिस्टम हबो सेटा डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हेल्पफुल हला भलिया हेबा उचित बोली से प्रोटेक्शनिज्म माने कहति सेटू आउ गोटे सेक्शन होत कना फॉरेन कंट्रोल्स द सेकंड एरिया ऑफ कंसर्न रिलेट टू द ओनरशिप ऑफ कैनेडियन बिजनेस बाय फॉरेनर्स इट वाज पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड फेनोमेना आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड हम कोन देखिले देयर वाज अ रैपिड इंक्रीज ऑफ फॉरेन ओनरशिप इन द कैनेडियन इकोनॉमी व्हिच वाज लिंक्ड टू द राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन तो वर्ल्ड वॉर सेकंड पर 1945 पर कोन देखिले ना देयर वर लॉट्स ऑफ फॉरेन कंपनी were established in developed countries also ए कनाडा रे मध्ये अनेक फॉरेन कंट्रीज गुडा को ओनरशिप नै कि एस्टैब्लिश करले एवं से गुडा को होतंती मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन गुडा को
the number of multinationals started their branches, plants or subsidiary inside Canada. So Canada रे तांकर निजरो branch सब create कले, by which the foreign controls टा कौन ना ये जो कनाडा इकोनॉमी ऊपर गोटे प्रेशर पड़ता तो यहाँ हूँ दुईटा इश्यू जोटा कि आम देखिए गोटे हूँ प्रोटेक्शनिज्म ऑन ट्रेड निजर ट्रेड को प्रोटेक्ट कले अन्यटी हूँ फॉरेन कंट्रोल्स ऑन वेरियस बिजनेस So the Boredom Commission आरंभ होता the first report on Canadia's economic prospects 1955 to 1957 was established as a result of increased foreign ownership in the Canadian economy. It was named Boredom Commission after its chairman Walter L. Boredom. The growth of foreign direct investment was pointed out, and it was also felt that legitimate Canadian interests were being compromised in the process. तो ये कौन देखा देइछला ना लेजिटिमेट कैनेडियन इंटरेस्ट को सर्व माने कोन सेव करा जाइछला बाय व्हिच कनाडार लोक माने कनाडार बिजनेसमैन माने कनाडार ट्रेडर्स माने बेनिफिट पाइबे द रिपोर्ट रिकमेंड दैट कैनेडियंस बी परमिटेड एट लीस्ट पार्ट ओनरशिप इन फॉरेन ओन सब्सिडियरी ऑपरेटिंग इन कनाडा से जो कमिशन टा गोटे कोन कंक्लूजन देला जे विदेशी जो माने कॉर्पोरेशन एठी करिवे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जी भी आसीबो सेठी कोन हबो ना कनाडार कैनेडियन ट्रेडर व कैनेडियन बिजनेसमैन से भी मध्य तार शेयर पाई परिबो प्रोवाइडेड ही और शी हैज टू इन्वेस्ट सम मनी तो सही कथाटा एठी कहल अछि unfortunately the report did not receive much attention and general argument was that Canada and Canadian workers in the particular world could benefit by the removal of all restriction to trade and foreign direct investment for nothing would raise the level of economic activity and boost the incomes more rapidly. तो सेठी कौन हला ना ए जो रिपोर्ट टाकू ए जो कमिशन रो रिपोर्ट टाकू कैनेडियन माने सेटा इंपोर्टेंस देले नै कारण से चाहुथिले ना जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करा जाउते सेटा को विथड्रॉ करा दो कोन पय ना कैनेडियन मानकर बेनिफिट पय कैनेडियन माने तारो बेनिफिट पाई परिबे तो सेठी पय इन 1960s कोन हेतला ना गोटे नुवा कौन कहबा वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म आसीथिला जोथि पय कि three more government sponsored reports in the late 1960s the early 1970s which describe various problems created by foreign owned subsidiary operating in Canada तो से जो रिपोर्ट गुडा को जो आसीथिला जो 1960s परे सेठी से देखिथिले जे ना जो फॉरेन कंट्रीज गुडा को फॉरेन कंट्रीज जो कॉर्पोरेशन गुडा करछंती से मानकर मोटिव होची केवल एक्सप्लॉयटेशन और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो द्वारा कि कैनेडियन माने मना करे देखले पहले ना सेया ही परिनो देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल Canadian branch plants not only lack the facility to conduct research and development but also lack full-fledged marketing and purchasing departments because these functions would often be managed by part from the US or Europe. Now, এটা फेल हेबार मुख्य प्रॉब्लम कौन थिला ना जेकोसी देश रे जदि कोनोसी ट्रेड बा इंडस्ट्री सेटअप होची से जदि किछि प्रोडक्ट नै कि आसुची से प्रोडक्ट को से माने अनेक समय रे तार कोन करिथांती ना ताको रिसर्च जरिया रे बाहर करिथांती रिसर्च फॉर एग्जांपल गोटे मेडिसिन कथा धरिबा बा कोनसी खाइबा जिनिस धरिबा तो जो खाइबा जिनिस बा मेडिसिन बा एनी प्रोडक्ट जोटा को कि रिसर्च जरिया रे करा जाय कि सेही रिसर्च ता कैनेडियन मानन को दिया गला नहीं एटा गोटे मुख्य प्रॉब्लम थिला आउ अन्यटा कोन थिला ना फुल फ्लेज मार्केटिंग कैनेडियन मानन को दिया गला नहीं सेही जो सब्सिडियरी माने थिले बा जो माने कि पार्शियली सेही अछन तो सेही माने ही ताको कोन जो माने विदेशी कंपनी गुडा सेहीटा कले तो ए जो प्रॉब्लम गुडा को देखियो को मिलिथिला तो फॉर एग्जांपल गोटे जर्मनी रो मुख्य होची कोन ना से जदि किछि प्रोडक्ट बाहर करिवे सेठी पाखा पाखी 80% तांको रिसर्च और डेवलपमेंट रे ताको इन्वेस्ट करंती ताको खर्च करंती पाखा पाखी 80% एवं 20% मात्र से रखंती प्रॉफिट तो ए जो कनाडा रे सेही सेते बेले 1960s रे एभलिया नथिला एठी केवल द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन गुडा को से निजे ही रिसर्च करिवे एवं मार्केट मध्य निजे करिवे बोली कि जोथि पई कि एटा प्रॉब्लम हेतिला कैनेडियन मान तो तापरे आउ गोटे होची ना वाटकिंस टास्क फोर्स गोटे आसीथिला जोटा कि 1968 रे
it recommended the creation of special agency to coordinate government policy and programs dealing with multinational corporations. तो ये जो उत्केंस टास्क फोर्स कहला ना गवर्नमेंट रो जो पॉलिसी अछि से जो से गुडाक एवं मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को डील करिए ये जो टास्क फोर्स तैयारी थिला टू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ दिस फर्म्स बाय प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन ऑन देयर एक्टिविटीज वाज वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस एजेंसी जे किछि इंफॉर्मेशन से जदी हाइड करूथिला बा लुचेई रखुथिला बा कोन कैनेडियन मान को शामिल करू नथिला मिसो नथिला जोथि पई कि ए टास्क फोर्स कहला ना इट हैज टू बी प्रोवाइडेड मोर इंफॉर्मेशन and their activities has to be disclosed तांकर जो एक्टिविटीज करूछंती जो मार्केट बा ट्रेड करूछंती सेटा को से माने डिस्क्लोज करबा को कुआ वाला एवं एठी गोटे आ गोटे रिपोर्ट आसिला ना ओहान रिपोर्ट गोटे अछि this report was published in 1970 and made suggestion that Canadians should attempt to secure 51% of ownership in foreign firms and laws should be made on this so as to counter well American extraterritorial jurisdiction. तो कौन है ना ओनरशिप तर कथा इठी आसिला जे 51% कैनेडियन मान पास रहिबो एवं 49% जे भी बाहर कंपनी जाके सेठी बिजनेस करिवो बा बिजनेस एस्टैब्लिश करिवो ता पाखरे रहिबो तो जो पावर ऑफ कौन कहबा ट्रेड दी भाग रे विभक्त करा गला 51% कैनेडियन मान पाखरे रहि बोली कहला गला तापरे आसी गेले गोटे ग्रे रिपोर्ट पब्लिश इन 72 also known as foreign direct investment in Canada recommended the establishment of screening agency and also specify the particular areas to be permitted or forbidden for foreign direct investment so ei report anusare eti kaya gala it will screen the agency जो multinational companies गुडा को बा corporation गुडा को सही Canada रे सेटअप हो छंदी से मानन को से स्क्रीन करिवो एवं कोटा दरकार होची कोटा दरकार होची से हिसाब रे ताको काम करिवो तो ए सब होची कोन ना माने कनाडा रा इकोनॉमिक कहबा हमें जे जो कोन इमर्जेंसी ऑफ कोन इकोनॉमी नेशनलिज्म बा कनाडा रा इकोनॉमी को किमिति बूस्ट अप कले फेज बाय फेज डिफरेंट कोन रिपोर्ट्स कमिशंस आसी की कनाडा रे सब निजो नेटिव लोक मान पई हेल्प करथिले तो एठी गोटे इंपोर्टेंस ता मु जो क्वेश्चन रिव्यू करूथिली सेठी मु देखिथिली जे क्वेश्चन ता सब बळे माने अनेक समय रे देखा जाय ना इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर्स इन कनाडा हाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर देयर एंड व्हाट आर द सोशल इंडिकेटर्स ए क्वेश्चन ता अनेक समय रे क्वेश्चन रे पत्रा जाउछि तो एटा गुटिके आपण माने माने कोन लिखिया पई चेष्टा करिवे तो एटा आसी पारे सो गुड्स एंड सर्विसेज जदि देखिबा the best way to describe the Canadian economy is to examine what kind of goods and services they produce and consume, what sort of job they do, how much they earn, and whom they work for and trade with. So, आमे जदि कनाडा रो इकोनॉमी को जानिबा पई चाहिबा ताहले तार कोन कोन से प्रोड्यूस करूची को गुड्स प्रोड्यूस करूची आ कोन सब सर्विस दउची सेटा जानिबा निहाती दरकार कौन कौन सब जॉब सब अच्छी को टाइप रो जॉब सब से प्रोवाइड करे लोक केते अर्न करंती बा को टाइप रो अर्निंग गोटे स्केल अच्छी को स्केल रे केते पाउची एवं से कहा कहा सहित बिजनेस करूछंती जे एटा होची ने गुड्स एंड सर्विस कनाडा रो तो सेठी कैनेडियन हैव लॉन्ग बीन फेमस टू देमसेल्फ एज ड्रूअर्स ऑफ गुड एंड ड्रूअर्स ऑफ वाटर बोली से कहंती ता माने हला Now, the country's development was initially motivated by desire to exploit the country's natural resources. तामाने सेही देशर जो नेचुरल रिसोर्सेस अछि ताकू से माने यूज करले ताकू व्यवहार करले एक्सप्लोइट करले ताकू कोन कंपनीज माननकू कंपनीज रे ताकू कन्वर्ट करिकि सेही नेचुरल रिसोर्स को बाहर सहित व्यवसाय करले एठी देखा जाय ना at the same time it is also true that while the resource industries still account for a significant share of overall economic activity in Canada as in other developed countries most output is produced in the manufacturing and service sector so manufacturing goods the manufacturing करा गला अनेक परिमाण रे manufacturing बेसी देखा गला एवं
आउ कोन ना सर्विस सेक्टर गुडा होटेल्स देन योर टूरिज्म टाको बहुत इंपोर्टेंट दिया गला तापरे हेल्थ सिस्टम टाको ए सब को जेतबे इंपोर्टेंस दिया गला से दुईटा रे तांकर इकोनॉमिक ता बहुत भलो हेतिला बोली कहा जाय In 1997, manufacturing account for 18% of overall Canadian output, while agriculture and the resource industries, the forestry, fishing, trapping, mining, petroleum, ये सब अनेक से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से कौन मैन्युफैक्चरिंग कॉलेज जो द्वारा कौन है जी ना तांकर इकोनॉमी का बहुत बढ़िया सेफ रहेगा और सेफ जोन रे मध्य रहिला तो एटा होची गुड्स एंड सर्विसेज तो नेचर ऑफ वर्क another way to describe Canadian economy activity is to look at the kinds and amounts of work conditions, do not at what they produce. The distinction between what is produced and the type of work done to produce is too often forgotten, but of course crucial. Moreover, mechanization କରାଗଲା mechanization ବା machinery जोटा कि तांकर direct production ପାଇଁ बहुत helpful ହେଇଥିଲା. The number of Canadians who actually drill or farm for living is minuscule, while 7 out of 10 Canadians now work in white collar occupation. ये जो प्रोफेशनल जॉब रे 10 रु 7 जण वर्तमान कोन करछन्ते ना काम करछन्ते बोली कहा जाय तो नेचर ऑफ जॉब इज वेरी human friendly, very people friendly, by which the people will live very peacefully. They will earn quite good amount and they will also have a good health. सेते माने स्ट्रेसफुल काइंड ऑफ नथिला तांकर कोन कहबा नेचर ऑफ जॉब ता जोथि पे कि से देश रे कोन हुए ना लोकन को रहइबा पय मध्य इच्छा हुए बा कहा जाए गोटे जेकोसी देशर नेचुरल रिसोर्सेस सहित तार स्किल्ड एवं तार ह्यूमन रिसोर्सेस मोस्ट इंपोर्टेंट थाए माने फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेस अछि किंतु ताकू प्रॉपर्ली व्यवहार करिया पय प्रॉपर्ली यूज करिया पय प्रॉपर्ली मार्केटाइज करिया पय कोन दरकार हुए ना एजुकेशन दरकार हुए तो कनाडा रा एजुकेशन सिस्टम ताकू देखिबा ना एजुकेशन प्ले द इंपोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी it empowers the people it enhances your income and it also help us to decision making mane ame kon kariba through our knowledge through our experience we can know so experience ho ki mane kaam karibar soili it all comes through the education that what kind of education you have received. It is known that the level of education influences the types of job people obtain and income they receive. तो से किए को काम करूची किए को जॉब करूची एटा डिपेंड करे ना से कोन एजुकेशन पाइची वेदर इट इज स्किल वेदर ही इज अ डॉक्टर वेदर इज अ इंजीनियर वेदर इज अ लॉयर वेदर इज अ सोशल वर्कर वेदर इज अ सिंपल इंडस्ट्रियलिस्ट विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन सो डिपेंड करे तो एटा डिपेंड करे तारो एजुकेशन ऊपर. Another trend was also observed related to the education. As more and more jobs required post-secondary education, young men and women become more likely to extend their stay in parents' home and delay marriage and starting their own families. So, Canada रे आउ गुटे भी trend देखा जाइथिला ना post-secondary education परे कारण से जो Canada हला US हला ए माने industrialist country, they are developed countries. तर development हेबार कारण होची कोन ना से बेसिक एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन अप टू माने ग्रेजुएशन पर्यंत करंती जो द्वारा कि से फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुझी परिबे मेडिकल सिस्टम ता बुझी परिबे निजर इंडस्ट्री बुझी परिबे बा लिटरेचर को बुझी परिबे सेति हेले कोन करंती ना से माने इमीडिएटली दे स्टार्ट देयर ओन बिजनेस किछि ना किछि निजे बिजनेस करिया पय चेष्टा करंती कि मार्केटिंग रे जानती कि मेडिसिन रे जानती कि लिटरेचर बा निजे राइटिंग से पसी जानती तो दिस हैपेंस तो ए सब देखा जाए कनाडा रे जो जो जोथि की एजुकेशन टाइप को मेजर कोन फोर्स आकार देखा जाए वर्तमान मध्य हमर इंडिया रो अनेक लोक सेटिकर एजुकेशन सिस्टम भलो भाबी कि अनेक लोक सेठी जाई कि अछंती. In addition to workforce education job opportunity, there are other indicators which determine the living standard or economic growth of any country. So, education बाबद रे आउ मध्य अछि जो गुडा को के इंडिकेटर जोटा कि गुटे देशर इकोनॉमी को
स्ट्रांग कराए गोटे देशर इकोनॉमी को बहुत माने भलो करि थाए तो एठी एटा एजुकेशन देखिले आमे ना लिविंग स्टैंडर्ड्स इन कनाडा देखिबा लिविंग स्टैंडर्ड कोन ना कैनेडियंस एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आमे इंट्रोडक्शन रे ही देखिथिले ना इट इज क्वाइट पीसफुल कंट्री क्राइम रेट ता बहुत कम अछि एवं यार एनवायरमेंटल बहुत भलो यार इंफ्रास्ट्रक्चर ता वेल एस्टैब्लिश तो कोन हुए ना बाय व्हिच people wish to live people enjoy to live here the usual estimates place a Canadian GP or gross GP per capita 5% to 15% below the US level and roughly equal to that in trade North European democracies. तो इसे देखा जाए ना ये जो कैनेडियन पर कैपिटा इनकम था माने यूएसए एवं यूरोपियन कंट्रीज रो पाखापाखी समान समान देखा जाए भी कुआ जाए जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ता टोटल पे हाई था in the fourth quarter of the year 2003 रो इटा डेटा देखु जे हमें economic growth advanced 0.9% with export being the main contributor to the growth तो एथि पे कुआ जाए वर्तमान हम सरकार मध्ये सेटा चेष्टा करछंती आमे जदी एक्सपोर्ट करिवा आमे जदी रप्तानी करिवा ताहले आमे कोन पाइबा ना वी विल गेट बेनिफिट आमे हमरो जहां आमे तयारी करछे तार आमे बेनिफिट पाइबा तो से जिनिसा एथि आमे देखुची जे ना कनाडा रे कोन हेते ना से माने बहुत कोन करथिले ना दे हैव एक्सपोर्टेड गुड्स टू अदर कंट्रीज so by which they got the remittances or you can say the tax or tariffs or money by which the living standard of the country has increased so ए सब होची माने कनाडा रो although some people enjoy increase in wealth over 1984 to 1990 period others did not with the result that during this period wealth distribution become more unequal so किछि समय पय सब देश रे समान न थाए तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मध्ये हेतिला संपत्ति रो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखियो को मिलितला कोन ना सेठी अनेक रीजन्स रे अनेक जेमिति कि से वेस्टर्न रीजन्स हो कि तर कोन अटलांटिक रीजन्स रे हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हेतिला कारण जेतेबेले इंडिविजुअल कंपनीज निज पाखरे सब प्रॉपर्टी रखे सेतेबेले डेफिनेटली गुटे सोसाइटी रे कोन हुए ना इनइक्वालिटी ता आरंभ हो जाय by which what happens lots of people or the huge number of people कोन होंदे ना सफर होंदे गोटे स्टडी हेतिला जोटा कि स्टडी रे देखा गला ना आर फैमिलीज गेटिंग रिचर से जो कोन प्रोजेक्ट ना थिला तो सेठी देखा जायतिला ना conducted to analyze wealth inequality conclude that in fact the trend was more towards unequal wealth distribution so जो wealth distribution ता कनाडा रे बहुत स्वल्प परिमाण रे हेतिला some groups such as young couples with children and recent immigrants have suffered substantial declines the growing proportion of young couples with children who have zero or negative wealth suggested that non-negligible fraction of today's young families may be vulnerable to negative shock having no accumulated savings that can provide liquidity in periods of economic stress so एठी कोन देखा जायतिला ना जो माने यंग मासे जो माने यंग जो पेरिफेरी रो सेंटर को गले बा गां रो शहर को गले सेठी सेही माने जो माने नुआ रे माइग्रेट गले सेही माने को ऊपर टिके कोन हैला ना इकोनॉमी इनइक्वालिटी बा वेल्थ इनइक्वालिटी ता देखिया को मिलिला तांको पाखरे जो सेविंग थिला सेटा मध्ये सरियो को बसिला माने भलो चाकरी खोजिया बा भलो जॉब करिया चक्कर रे there is a need to modify policies aimed at redistribution keeping in mind the social framework of society that is there should be more equality in distribution of wealth but the same trend is evident in other developed countries ये जो redistribution of wealth ता करिया पई ना गवर्नमेंट कोन कैनेडियन माने टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट भी आसी से कोन करंती बा एटा डेवलप कंट्रीज रो कोन गुडी देखिबा को मिले जे प्रिंसिपल बा रूल्स से माने टैक्स ता बढ़ी नियंती टैक्स ता काहो पे बढ़ाती ना जो माने रिच पीपल तांको ऊपर टैक्स बढ़ी नियंती बाय व्हिच दे विल गेट सम मनी बाय व्हिच दैट मनी विल बी सर्व और हेल्प टू द नीडी सेति पई से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ सिस्टम ता मध्ये आरंभ करंती बा करिथिले मोरओवर Canada is not only a world leader in telecom innovation
connectivity, software development, and the internet economy. It also popular for its wood products for construction, renovation, and interior decoration. So Canada को केवल जे हमें जानिबा नहीं ना यार टेलीकम्युनिकेशन इनोवेटिव बहुत बढ़िया बा कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर ता बहुत बढ़िया ता छोड़ा कनाडा ता माने वीट प्रोडक्शन रे भी बहुत बढ़िया ता सहित वुड प्रोडक्ट्स रो जेते भी अछि जेमति कि कंस्ट्रक्शन साइड रे रिनोवेशन करिवा एवं इंटीरियर डिजाइन घर रो इंटीरियर डिजाइन करिवा रे म्हणजे से बहुत हेल्पफुल. So, जो Canada अच्छी economically sound and one of the developed country and second largest country economically माने कहा जाए केते बड़े लिस्ट रे आसे तो तार संपर्क आम भारत सहित केमिति आम सहित तार संपर्कटा केमिति सेटा हमें देखिबा. प्रथम तो आमे जानि छी जे हमर जो डॉक्टर इंजीनियर्स अनेक मात्रा रे माइग्रेट करी जानती काहे कि ना कनाडा रो जो कोन एम्प्लॉयबिलिटी टा ए सेक्टर रे बेसी हेल्थ सेक्टर रे बेसी टेलीकॉम इंटरनेट सॉफ्टवेयर ए क्षेत्र रे मतलब बेसी जोथि पय कि कोन होछि ना इंडिया रु अनेक लोक माइग्रेट करी जानती. तो इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर ऑफ कनाडा. Bilateral trade between India and Canada almost triple in the last decade to reach से जहाँ भी हो ये गोटे 2.2 कैनेडियन डॉलर्स 2000 देखा जाइछि जे हमरो आ तांकर संपर्क सब क्षेत्र रे भलो सब सेक्टर रे भलो माने ट्रेड रो आरंभ करी कि कल्चरल एजुकेशन हेल्थ ए सब रे हमरो भलो संपर्क अछि बोली कहा जाय. कारण Canada's main export to India includes telecom equipment, fish, pulses, potash, and wood pulps. Indian export to Canada increased from 1.3 billion in 2002 to 1.4 billion in 2003. आमे कोन कोन ताको पठौछु ना export to Canada are predominantly apparel, yarns, fabric, precious stones, spices, leather items, and frozen seafood. So आमे ए सब जिनिस आमे ताको पठौछु. That is why our relation is quite good. ता छडा जोटा मु कहउथली जे हमरो जो स्किल हमरो इंजीनियर्स हमरो डॉक्टर्स ए माने अनेक परिमाण रे जाईकी सेठी सेटल हे गलानी एवं ए जो 84 रे जो हेइथिला कोन कहइवा ए जो हमरो पंजाब मानन को ऊपर जो कोन राजीव गांधी को गवर्नमेंट टाइम रे इंदिरा गांधी जो मरिथिले जो कि अटैक करा दितला सेते बेले अनेक पंजाबी जाईकी सेही सेटल हे गले कनाडा रे यूएसए रे तो गले कनाडा रे मध्य गले एवं से माने आज कल बिजनेस रे गोटे गोटे बहुत बड़ बड़ जायंट हेकी अछंती. सो ए यूनिट टाको कनाडा यूनिट टाको एठी कंक्लूड करबा जे कोन कनाडा इज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन द वर्ल्ड रैंक फोर्थ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. तो चतुर्थ स्थान रे एटा ह्यूमन डेवलपमेंट रे अछि. It is one of the strongest and healthiest among the 7 leading industrial countries. The group of 7 अछंती group of 7 countries जो माने कुआ जाए यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान ए माने को ग्रुप ऑफ 7 बोली कुआ जाए. तो ए माने को मध्य रे यार होची चतुर्थ स्थान. And between 97 to 2004 Canada experienced the strongest growth in employment among the group 7 countries. ग्रुप 7 माने हमको बुझी पड़ियो ए डेवलप कंट्रीज मनंतर कथा को कहा जाउची. The driving force behind recent economic development in Canada are global in scope, such as rising energy prices, and have contributed to the appreciation of the Canadian dollar. The earlier section of this, what we have seen is that the economic scenario in the country is quite good. The economic development of the country, people, and the government of Canada gives equal importance to social and environmental development. हम कौन देखुचे ना कनाडियन सरकार एनवायरनमेंट को बहुत इंपोर्टेंस दियंती एनवायरनमेंट एवं ता सहित सोशल डेवलपमेंट को बहुत इंपोर्टेंस दियंती. या छडा knowledge in an attempt to develop into knowledge based economy Canada emphasizes the participate effectively in society and economy. So जो knowledge skill अछि से knowledge टाको disseminate करंती distribution करंती by which everybody will get benefit माने सेति पय से माने एवं जणा जाय एवं कंक्लूजन रे या कहबा कनाडा रो रिलेशन आम देश सहित भलो अछि.
हेलो डिस्कनेक्ट हेई जाइथिला कोन पे के जाने नाम बैक तो हमें एठी देखिबा ना Zimbabwe is one of the most economically developed on the African continent, richly endowed with natural resources. So Zimbabwe रे natural resources बहुत परिमाण में अच्छे. The former British colony of Southern Rhodesia become the independent Republic of Zimbabwe on 18th April 1980 after the prolonged war of liberation. Despite its youth, the country has achieved a level of economic development on characteristics of the sub-Saharan African nation. Second, South Africa in the economic development, Zimbabwe's economic system is one of indicative of transitional country, a country making the transition from dependency underdevelopment to self-reliant industrialization. So Zimbabwe कौन ना गोटे natural resourceful complete country जो थी कि यार ये कौन ब्रिटिश रू इंडिपेंडेंट पाइला ये जो 1980 से माने रिसेंटली बहुत दिन है नहीं एवं it was only happened because of this liberation movement ता सहित जेहेतु एटा गोटे यंग कंट्री जोटा कि रिसेंटली लिबरेट हेची तार इकोनॉमिक कंडीशन टा माने स्ट्रांग हेबा को बसिला जो सब सहारन अफ्रीकन रीजन रे तापर साउथ अफ्रीका जेहेतु तार पाखा पाखी कंट्री टा जो टाइम की तांकर जो इकोनॉमिक कंडीशन इकोनॉमिक रिलेशन टा बा एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेशन टा तांकर भलो होइतला जोथि टाइम की गोटे दिन थिला ना गोटे ट्रांजिशन थिला एवं एटा डिपेंड करूथिला अंडर एम्प्लॉयमेंट हेकी थिला किंतु ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल सेटअप हेबा द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हेबा द्वारा से सेल्फ रिलायंट पर निज ऊपर निर्भर करिकि चलुछि वर्तमान जिम्बाब्वे गोटे माने कोन कहबा इकोनॉमिकली साउंड कंट्री बोली कि सब सहारन अफ्रीका रे देखा जाय A comparison of various South African regions has been made to understand Zimbabwe within the region's perspective. The contemporary social, political, and economic scenario of the country has been discussed at length. So, हमें इठी देखिबा ना यार historical and social economic background ता कौन geography रे हमें देखिबा तार geographical location और geographical landmark Zimbabwe is landlocked country. एटा होची गोटे landlocked country जहार की कोनोसी coastal line नहीं बा समुद्र ना Sub-Sahara area of the African continent bordered by South Africa to the south, Bosnia to the west, Mozambique to the east, and Zambia to the north. So, यार चारि पाखरे एई सब कंट्री अछंती साउथ अफ्रीका अछि साउथ आडे बोस्निया अछि वेस्ट आडे मोजाम्बिक अछि तार ईस्ट आडे एवं जाम्बिया अछि तार नॉर्थ आडे तो हमें कोन देखुछे ना इट इज कंप्लीटली ए लैंडलॉक्ड कंट्री with an area of 391,090 square kilometer. Zimbabwe is only slightly larger than the state of Colorado. Harare is Zimbabwe's capital and the largest city with the population of one. So, हमें ये population को देखो ने तारो capital होची Harare. So, यारो हमें geographical देखिले यारो peoples को देखिबा Zimbabweans are comprised of two primary ethnic groups. The Sona comprise 74% of the population and Debelia comprise 20%. Other ethnic blocks, groups and Asian makes 4% of the population while white makes up just over 1% of the population. So, तार population टा गोटे ग्रुप जो सोना अछंती से माने ही सबठारु अधिक अछंती तांकर ऑफिशियल जो लैंग्वेज हो जिम्बाब्वे इज इंग्लिश अदर लैंग्वेज इंक्लूड्स देवेलिया और सिंदेवेला सोना और नमोरियस ट्राइबल डायलेक्ट सो तांकर जो ट्राइबल डायलेक्ट से कि से माने व्यवहार करंती किंतु मोस्टली तांकर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होची इंग्लिश जेहेतु ब्रिटिश अनेक दिन धरि कि से कि रहि जाइतला तो दैट इज व्हाट मे बी एन इंपैक्ट जोति पई से माने इंग्लिश टाको तांकर ऑफिशियल लैंग्वेज कले तो इथि just we will see history slightly we will see history Zimbabwe's history dates back to 19th century AD and it is believed that this period is which made great buildings were built buildings indicate of any early great civilization so jo civilization great civilization jimti thila for example amar Mohenjo-daro
हरप्पा सिविलाइजेशन से भलिया तांकर मध्य बहुत बड़ बड़ बहुत बढ़िया बढ़िया कोन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थिला of the many sites the most impressive is the great stone house or great Zimbabwe the sources of the country's name तो ए जो गोटे साइट अच्छे जोटा कि ग्रेट स्टोन बोली हाउस बोली कहा जाए जोटा कि सेठू ए जो कंट्री रो ना आसी बोली भी कहा जाए it has impressive nature of the great Zimbabwe and other building sites so building construction बा पुराना कालिया जो ढांचा रे building construction तारो हिस्टोरी ताकू बहुत परिमाण रे इन्फ्लुएंस करी थाए जोटा कि जिम्बाब्वे रे देखिबा को मिली छी एठी हमें देखिबा एटा जेता हिस्ट्री तो पॉलिटिक्स रे कोन ना 1960s Rhodesia was a country of two factions the ruling white minority who wanted complete independence from the UK and the indigenous African majority who wanted greater control over their country and on and to institutional racism तो जो रोडेशिया कौन करथला ना जे रूल करिया पई माने माइनॉरिटी माने संख्या रे कम व्हाइट पीपल मानक सहित मिसी की ए जो मेजॉरिटी मानक सहित अनेक समय रे टाइप करथला जोटा कि तांगर पॉलिटिकल सिस्टम रे बहुत समस्या देखा जाइथिला It was in 1980 that the free democratic election was held in Rhodesia for the first time with Robert Mugabe, Zimbabwe African National Union, achieving an absolute majority. April 18, 1980, the British government formally granted independence. So, we देखी थिले जे जो जिम्बाब्वे टा रिसेंटली इंडिपेंडेंट पाइछि एवं तारो लोक मानकु निजे ही से माने शासन करछन्ते. Now, let's see economy तांकर इकोनॉमी टा कोन जिम्बाब्वे's economy structure is one of the great potential एथि पई कारण तारो नेचुरल रिसोर्सेस टा बहुत अछि एवं in the years prior to its independence Zimbabwe put great emphasis on developing its mining industry and as well as it has a great result also कारण mining टा तांकर बहुत अछि बा नेचुरल रिसोर्सेस बहुत अछि जोटा को से माने विदेश को रप्तानी करथिले the mining such as copper, nickel, gold and metallurgical grade ferrochromite ये सब कोन ना सेठी बहुत अछि जोटा कि तांकर इकोनॉमी टाकू स्ट्रांग कला तांकर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टाकू ठीक करथिला the other half of the Zimbabwe's GDP is generated primarily in the agriculture sector with the most output produced at the subsistence level by most of the population so agriculture sector मध्ये तांकर स्ट्रांग माने apart from mining एग्रीकल्चर को मध्य से बहुत इंपोर्टेंस देले जो द्वारा कि तांकर इकोनॉमी का स्ट्रांग हितला बा से सेल्फ डिपेंडेंट हितले जिम्बाब्वे's mineral export industry is the key to national development success so जो mineral बा माइनिंग करी कि से जहा एक्सपोर्ट करंती आजि मध्य सेटा होची तांकर देशर इकोनॉमी को सक्सेस करिवार गोटे मूल कोन कहबा that is the foundation that is the base small because it was a छोटिया country किंतु mining industry modernize and strategically develop towards exports so जेहेतु एटा गोटे छोटिया country किंतु तांकर इंडस्ट्रियल सेक्टर रे एते परिमाण रे मॉडर्नाइज करिसंती जो द्वारा कि से माने एक्सपोर्ट करि परछंती तांकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ताकू से माने चेष्टा करूछंती टू हैव ए गुड से माने व्यवहार करूछंती हेवी मशीनरी इन ऑर्डर टू extract natural resources from their country so the natural resources to extract kariya pai se heavy machine guda ko madya ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି the area within the vicinity of the mines are highly developed and urbanized to ensure adequate and able workforce so urbanization ta jehetu industry setup hela mane sethi निश्चित हम कोन देखुचे ना urban ही जाय सेटा एवं Zimbabwe participate in non-aligned trade for non-strategic products such as textiles to textile सहित तांगर माने संपर्क जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मान सहित माने अन्य कंट्री मान सहित this has greatly reduced the country's chance of becoming dependent on the trade partner so सेति पई ये सेल्फ डिपेंडेंट बा ए कंप्लीटली डिपेंडेंट करछि तार निजरो नेचुरल रिसोर्सेस निजरो एग्रीकल्चर ऊपर नाउ यार आमे देखिबा जे तार
एठी जिम्बाब्वे रो इकोनॉमी डेवलपमेंट पॉलिसीज ता को आमे टिके हाईलाइट करबा एवं एटा ही क्वेश्चन रे अनेक थरो पचरा जाई है तो आमे देखिबा एठी जिम्बाब्वे रो इकोनॉमी पॉलिसी ता कोन थिला ना जेहेतु 1980 रे इंडिपेंडेंट पाई थिला तो से धीरे धीरे गुटे इकोनॉमी पॉलिसी डेवलप करी 1991 टू 2000 भितरे से कोन कोन करिसंती Zimbabwe embarked as a program for post-war reconstruction, which was supported by some foreign donors. So जेहेतु से अनेक समय रे वार रे लिप्त थिला निजरो लिबरेशन पाई निजरो फ्रीडम पाई अनेक समय रे स्ट्रगल करथिला तो सित पाई इकोनॉमिकली से साउंड अप नथिला किंतु 1980s परे अनेक फॉरेन डोनर्स माने सब हेल्प कले ना कोन पाई ना इन ऑर्डर टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर इकोनॉमिक सिस्टम starting from industry to infrastructure building, construction, road, medical, education, all. तो ये सब माने हेल्प करिया पई अनेक फॉरेन डोनर्स आसीथिले माने 1991 onwards एठी देखा जाइथिला ना the reconstruction was successful as the economy was recapitalized and reintegrated into the world economy एटा सक्सेसफुल एथि पई हिथिला ना किछि बाहर जो इंडस्ट्रियलिस्ट अछंती से माने सेठी जाकी इंडस्ट्री सेटअप करथिले एवं माइनिंग क्षेत्र रे से माने बहुत कोन लोक मानन को एम्प्लॉयमेंट देथिले बाय व्हिच से एक तो इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट हिथिला एवं लोकन को एम्प्लॉयमेंट मध्ये मिलिथिला एवं कोन हिथिला ना बाय व्हिच इट हैज गॉट रिकॉग्निशन इन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम रे लोको बा अदर कंट्रीज जानि को पाइले यस जिम्बाब्वे इज डूइंग बेटर तो सेति में तांकू से शामिल करिया को धरले ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades जिम्बाब्वे अंडरटुक सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 90s रे जिम्बाब्वे देखला गवर्नमेंट सक्कम टू वेस्टर्न डोनर प्रेशर एंड एग्री टू इंप्लीमेंट द 5-year इकोनॉमी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम तो कोन हितला ना जो 5 years इकोनॉमी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम का से आरंभ करिथिले जोटा कि कोन करथिला ना इकोनॉमिक क्राइसिस को मिनिमाइज करथिला व्हिच हैड एप्लीकेटेड द कंट्री सिंस 1980s से जो मेजर कोन कोन करा जायथिला ना रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल जोटा कि कनाडा रे हम देखिथिले जो नेटिव पीपल माने करिथिले बा इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो आरंभ हेतिला एटी मध्ये सेया हेतिला कोन ना रिमूवल ऑफ प्राइस कंट्रोल्स जो प्राइस कंट्रोल ता अन्य की करूथिला सेटा को कंट्रोल करे रिमूवल ऑफ वेज कंट्रोल से जो वेज ता आउ जने कंट्रोल करूथिला ताकू रिमूव करले रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर थिला जो माने कि हाई लेवल रे असंती आइदर मुगबे और द मिनिस्ट्रियल लेवल तांकर एक्सपेंडिचर ताकू कमे को बसिले 40% डिवैल्यूएशन ऑफ द जिम्बाब्वे डॉलर्स सो जो कोन करगला ना जेहेतु यूएसए डॉलर कैनेडियन डॉलर सिंगापुरिया डॉलर्स एटी सब व्यवहार करा जातलो सेटा को डिवैल्यू कले डॉलर रिमूवल ऑफ सब्सिडीज ऑन बेसिक कंज्यूमर गुड्स जो बेसिक कंज्यूमर गुड्स अछि से सुते सब्सिडी को हटेबा पई बंदोबस्त कले लिबरलाइजिंग द फॉरेन करेंसी एलोकेशन सिस्टम जो फॉरेन करेंसी अछि ताको लिबरलाइज करिया पई चिंता कले removal of protection of non-productive import substitute industry and increase profit remittances abroad. So, radical restructuring of the various forestals and their other public enterprise. आमे देखिले एठी से एई सब मेजर्स गुडा को से इंट्रोड्यूस कले जोथि पई कि तांकर इकोनॉमिक कोन हेतिला ना जिम्बाब्वे रो इकोनॉमिक ता स्ट्रांग हेतिला एवं they have become self dependent on their own economy nijero economy re nijero desar re se mane nije depend heithile ame dekhiba impact of economic structural adjustment policy macro economic crisis kon hoitila Zimbabwean dollars has been devalued repeatedly and after the crisis that started with the land restitution process has become the almost worthless. The generous liberalization of the economy culminated in the lifting of protectionism. तो इठी कोन हेतिला ना जो लिबरलाइजेशन ता हम कहिथिले जो 90s रे हेतिला से लिबरलाइजेशन ता नॉट ओनली इट हैज कम टू इंडिया बट आल्सो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एटा जिम्बाब्वे रे मते पेनिट्रेट करथिला बा सेठी मते देखियो को मिलितला बाय व्हिच देयर क्राइसिस द जिम्बाब्वेन इकोनॉमिक क्राइसिस हैज uplifted by opening of the market for the industrialists or businessmen. This opened up the door of domestic industry to cheaper imports and result in the closing and downsizing of many labor-intensive industries.
जो मेनी जो इंडस्ट्री गुडा अधिकांश लेबर दरकार होता से इंडस्ट्री गुडा को मेशिनरी सपोर्ट निया गला बाय व्हिच कौन है ना तांकर इकोनॉमिक सिस्टम ता भलो हितला बोली देखा देई थाए सेवर ड्रॉट इन द कंट्री सिग्निफिकेंटली एकी गोटे ड्रॉट भी हेतिला जो द्वारा कि तांकर इकोनॉमिक कंडीशन ता कोन स्ट्रांग माने भलो रही परला नै किछ समय पय सेटो कोन सब असुविधा हेतिला ना अनएम्प्लॉयमेंट देखा जायतिला एवं पॉवर्टी ता देखा जायतिला पॉलिटिकल डिससैटिस्फैक्शन ता हेतिला कारण जेतेबेले कोनोसी देशर अर्थनीति बा इकोनॉमिक सिस्टम ता बिगड़ी जाए सेतेबेले कोन हुए डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट ता इंक्रीज करि थाए एवं अनएम्प्लॉयमेंट जेतेबेले इंक्रीज करियो डेफिनेटली तार इंपैक्ट ता पकेबो लोकन को ऊपर लोक पॉवर्टी को आसी जिवे बा गरीब श्रेणी को गरीब हेबा को माने गरीब संख्या रे आसी जिवे कारण जेतेबेले इनकम ही नाही तो डेफिनेटली द कंजम्पशन पैटर्न्स द लोकन को कमी जिवो एवं लोक जेते परिमाण रे कोन कंज्यूम करूथिले सेटा कमी जिवो किंतु जो पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटजी से कोन करूथिले जेहेतु अनएम्प्लॉयमेंट बढ़िथिला एवं पॉवर्टी आसीथिला ए 90s रे तो सेतेबेले से माने कोन करिथिले ना जो पॉवर्टी इरेडिकेशन पय पॉवर्टी टा को हटेबा पय द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड हाउ टू कंट्रोल एंड इज लॉन्ग टर्म एलिमिनेट इज हैज बीन a central issue in the development and planning discourse in Zimbabwe since 1980s तो सब कंट्री चेष्टा करती देशर लोक केमिति गरीब नथिबे एटा माने सिंपल नेचुरल वे समस्त डील करती तो जिम्बाब्वे रे मध्ये सेया हितला जे ना एमिति कोन कले बा को स्ट्रेटजी अप्लाई कले लोकंकर गरीबीटा कमिबो एवं से माने भले रही पारिबे तो सेठी से माने कोन कले ना पॉलिसी गुडा को रिव्यू कले जो जो पॉलिसी गुडा को थिला पुराना पॉलिसी ब्रिटिश टाइम रे से पॉलिसी को रिव्यू करिके नवा पॉलिसी सब आनिथिले एवं सेठु से कोन कले ना पॉलिटिकल विजन करा गला ना लेट्स हैव एन इगैलिटेरियन सोसाइटी भाया ग्रोथ विथ इक्विटी कारण समस्त को जॉब दिया जीवो समस्त को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इनकम दिया जीवो बाय व्हिच दिस नेशन और द कंट्री जिम्बाब्वे विल हैव ग्रोथ सेतार ग्रोथ भी हबे एवं समस्त भले रहिबे ना केमिति हेई परियो ना इट इज इफ वी विल हैव ए इगैलिटेरियन काइंड ऑफ सोसाइटी माने कम्युनिटी काइंड ऑफ सोसाइटी बा कम्युनिटेरियन सोसाइटी जो कि समस्त समान बा समस्त इक्वल शेयर पांती एठी तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रे या किंतु सेटा काम देई नथिला सो द प्रोजेक्ट वाज नो लॉन्गर परस्यू विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम मेंशन अर्लियर जोटा कि हम देखु छे ना इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड an important component was to the social dimension of adjustment through social development fund which was set up to deal specifically with what were considered as the transitory negative effects of economic structural adjustment program तो ये जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकली स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम रे देखा जायतिला ना however the experience of social development what is called social dimensions of adjustment dekha jaithila strategy and the drought of 1991 and 92 pointed to the need to develop a more detailed strategy of government action so she would nuwa strategy apply kale by which they have removed the they have minimized the poverty level seita thila na kono ना दी फॉर्मुलेशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन एक्शन प्लान पाप बोली से गोटे कोन प्रोग्राम आरंभ कले जो द्वारा कि इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रेजेंटेड टू कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग पेरिस इन डिसेंबर 1993 यार ऑब्जेक्टिव ता कोन थिला ठीक है देखि देबा द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल डायमेंशन एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाज टू प्रोटेक्ट द पुअर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स द्वितीयटा थिला ना स्ट्रेंथन इंटरनल हाउसहोल्ड एंड कम्युनिटी लेवल कोपिंग और सर्वाइवल मेकानिज्म ता देखा माने ऑब्जेक्टिव ता थिला थर्ड रे थिला कोन ना मिनिमाइज कॉस्ट टू द फिकस थ्रू कॉस्ट रिकवरी प्रोग्राम्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एजुकेशन एवं हेल्थ सेक्टर रे
कॉस्ट मिनिमाइज करा गला जो द्वारा कि लोक बेनिफिट पाई पारियो बोली कि कहा गला ए जो एसडीए सिस्टम रे फोर्थ हला कोन elevated poverty contributed to improvement of the standard of living of the poorest members तो ए सब करिया द्वारा कोन हला ना तांकर जो पॉवर्टी सिस्टम ता कमी जाई थिला एठी आउ गोटे इंपोर्टेंट सेक्शन होची जोटा कि इंडिजिनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इंडिजिनाइजेशन बा नेटिवाइजेशन और लोकलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी so how they are indigenize this their economy. Indigenization is the process of empowerment of the native communities aimed at reducing the racial inequality in the ownership and management of economic resources. Indigenization बा निजत्व परिवार निजत्व प्रोसेस होची को जोरिया करा गला ना एम्पावरमेंट करा गला लोकन को निजर कम्युनिटी लोकन को एवं सेही भितरे रेशियल इनइक्वालिटी ता मिनिमाइज करा गला रिड्यूस करा गला कारण सबु देश रे जो अफ्रीकन कंट्रीज रे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ता देखिया को मिली थाय तांकर निज भितर मते किछि रेस अछन जो माने कि जन थारु अलगा जेहेतु जिम्बाब्वे को ब्रिटिश रूल करूथा व्हाइट एवं ब्लैक रो सीटा गते रिवोल कोन फाइटिंग बा कोन कहला स्ट्रगल ता सब बेले चली थिला तो तापरे आसिले कोन ना ओनरशिप ऑन मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी रिसोर्सेज जो माइनिंग सेक्टर अछि जो नेचुरल रिसोर्सेज अछि ताकू मैनेज करिया पई ना निजरो मैनेजमेंट गुरुस निजरो मैनेजमेंट स्किल्ड प्रोफेशनल सब आसिले जो द्वारा कि कोन होइछि ना इट हैज मल्टी फेसेट प्रोसेस व्हिच आर एज इंक्लूड्स सो ये जो इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस रे कोन कोन थिला ना इट हैज 7 नियरली 6 points. So let's see. Prothom of the creating condition for growth and expansion of business already owned and controlled by the indigenous people. जो नेटिव लोक गुडा को जो बिजनेस को होल्ड करूथिले सेही बिजनेस गुडा को कोन करा गला ना एक्सपांड करा गला किमिति एक्सपांड करा गला से मान को एनकरेज करा गला बाय एक्सपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट्स टू अदर कंट्रीज. नंबर 2 facilitating the creation of new business by indigenous people. जो लोक नया बिजनेस करिया पई चाहिबो ता पई फैसिलिटेट करा गला बा ताकू अपॉर्चुनिटी दिया गला दैट he or she can start a new business. Number 3 facilitated the transfer of ownership and control of business from non indigenous to indigenous people. एमिति भी फैसिलिटेट करा गला अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा गला जे जो नॉन इंडिजिनियस अछंती बा व्हाइट पीपल अछंती तांकर इंडस्ट्री को चाहिए इंडिजिनियस बा नेटिव पीपल ताकू मैनेज करि परिबे विच दे ओन मनी. नंबर 4 it increases indigenous participation in joint venture with foreigners or locals. आउ गोटे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करा गला कोन ना जॉइंट वेंचर माने गोटे कंपनी से अन्य कंपनी रो लिंक बा से भितर नेटिव लोक हेतिबो सेटा करा जायतिला. Another thing was done, that is number 5 accelerating the black advancement to effective management and policy making position in non indigenous owned business. जो नॉन इंडिजिनियस बिजनेस ऑन करथिले तांको सहित गुड रिलेशन बने की पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी ता इंप्लीमेंट करा गला तांको ऊपर बाय व्हिच द बेनिफिट्स और बिजनेस कैन बी डन बाय द जिम्बाब्वे पीपल. तापर नंबर 6 होची इट हैज एक्सपांडेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द रूरल एरियाज एंड फॉर द लोकल पीपल जोटा कि इंडिजिनियस पीपल थिले तांको पई एटा करा गला. दीज आर द indigenization of economic process in the Zimbabwe. So post independent period रे तांकर कोन होइथिला ठीक देखिबा पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड रे से मानकर कोन सब होइथिला पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट सिनेरियो सेठी कोन होइथिला ना इंडिपेंडेंस पर गवर्नमेंट निजरो जेतु जिम्बाब्वे निजरो गवर्नमेंट हेतिला सेठी कोन से देखथिले ना it gave a social policy priority as a master of concern to correct the imbalance inherited from colonialism. जो colonialism जोटा चली थिला जाटा ब्रिटिश तक चली थिला सेही जिनिसटा को प्रथम प्राइमरी इंपोर्टेंस ता दिया गला ना कोन ना सोशल पॉलिसी ता को प्रायोरिटी दिया गला लोकंकर हेल्थ लोकंकर एजुकेशन ता को बहुत इंपोर्टेंस दिया गला. तापर कोन हला as a result the first remarkable progress was scored especially in the areas of education, health,
वाटर सप्लाई सैनिटेशन एई सब करा गला जो द्वारा कोन हैला ना ए जो ड्रॉट हेतला सेटा को किछि मात्रा रे मिटिगेट करि पारथिले ए जो सक्सेस हेबार कारण थिला कोन ना तार दुईटा कारण थिला ना गोटे होची पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस ना सोशल जस्टिस टाकू से बहुत इंपोर्टेंस देले ना जो माने भी कोन कहया इकोनॉमिकली माइनॉरिटी सेठी से मानन को सोशल जस्टिस दिया जाय कि से मानन को ऑल अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हेल्थ बेनिफिट सैनिटरी बेनिफिट एंड वाटर सप्लाई बेनिफिट ए सब दिया जायतिला नंबर 2 रे कोन होइतिला ना they need to dismantle the unequal discriminatory practice and structure inherited from the colonial past तो जेहेतु colonial system रे गोटे discriminatory system थिला black white रो system थिला धनी गरीब रो तांकर सेठी भी थिला सेटा को से कोन कले ना ताकू पूरा कंप्लीटली खत्म कर देले जोटा कि इक्वालिटी आनिला ए जो पोस्ट इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड तो ए जिनिसटा ही हमें एठू देखु छे कंक्लूजन को आसीबा ना we know that Zimbabwe is a landlocked country या होची लैंडलॉक कंट्री तार चारि पाखरे कोनोसी समुद्र नाही तो चारि पाखरे अछंती अन्य देश गुडा को साउथ अफ्रीका मोजाम्बिक तापरे आ दुईटा जाम्बिया अछि आ गोटे देश मुगली अछि तो ये सब अछंती चारिटा देश एवं तार जेहेतु एटा को ब्रिटिश शासन करथिला एवं 1980 मसिया रे से इंडिपेंडेंट हेछि तो सेट में से धीरे धीरे तार इकोनॉमी तार सोशल तार कोन कहबा नेशनल इकोनॉमी टा को धीरे धीरे से सुदृढ़ करिवा को बसिला एठी कोन हला ना जो इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन पीरियड रे से माने मध्य वेलकम कले ना मार्केट शुड बी ओपन एवं से माने बहुत इंपोर्टेंस देले कोन ना एक्सपोर्ट करिया पई एक्सपोर्ट कले तांकर माइनिंग प्रोडक्ट्स गुडा को बाहर को जो द्वारा कि तांकर इकोनॉमी टा स्ट्रांग हला ता सहित से माने इंपोर्टेंस देले ना नेटिव पीपल माने बा इंडिजिनियस लोक माने बिजनेस रे अपॉर्चुनिटी पांतु एवं से मानकु बहुत कोन एनकरेज करगला बाय व्हिच बिजनेस सेटलमेंट बिजनेस भलो हितला जिम्बाब्वे रो जो सोशल एवं ह्यूमन डेवलपमेंट हम कोन देखिथिले ना इंडिपेंडेंट परे तार गुटे हाई ग्रोथ हेतिला इट रिमार्केबल इन द जिम्बाब्वेन हिस्ट्री तापरे कोन हेतिला ना the initial section of what we have seen is that it has a demography history and socio-economic background of the country जो ठीक हमें देखिथिले ना it has lots of natural resources by which it has grown in different way हमें एठी हमें देखिले कोन ना ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जिम्बाब्वे thrust a social policy priority approach to correct the imbalance inherited from the British colony तो हमें एठी देखिले ना जेहेतु ब्रिटिश अंडर एरिया थिला ब्रिटिश ब्रिटिश रूल करूथिले तो जोति पई से जो इकोनॉमी इनइक्वालिटी ता थिला ताकू मिटिगेट करा गला थ्रू इंडिजिनियस ट्रेडर्स इंडिजिनियस बा लोकल बा नेटिव लोक माने सेठी आसिले एवं ताकू कोन समस्त बिजनेस रे पसिले जो द्वारा भी कोन हला ना तांको देशर हेल्थ सिस्टम ता इंप्रूव कला इकोनॉमी सिस्टम ता इंप्रूव कला तांको देशर कोन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कला एवं से गोटे कोन होइला ना गोटे इंडिपेंडेंट कंट्री निजर कोन कहबा दे हैव गॉट देयर ओन पॉलिटिकल राइट्स सो दिस इज व्हाट अबाउट जिम्बाब्वे एटा होची जिम्बाब्वे रो स्टोरी जोथि कि से बा जिम्बाब्वे रो सोशल इकोनॉमी कोहंतु कल्चरल कोहंतु इट इज ऑल डिपेंड तो गोटे जिनिस हमें जानिले जे एटा रिसेंटली इंडिपेंडेंट पाइछि बहुत दिन हेइ नै 1980 मसिया माने इट्स अ वेरी क्लोज हमर लास्ट यूनिट एठी देखिया को पड़ियो ना ब्राजील जोड़ा कि ब्राजील विषय हमें जानिबा तो एठू हमें कौन जानिबा ना एठू हमें जानिबा ना तारो डेमोग्राफी तारो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राजील रो हमें जानिबा इकोनॉमी सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम एनवायरमेंटल कंसर्न ता सहित हमें एठी आउ मध्ये जानिबा जे तारो सोशल इश्यूज तारो चैलेंजेस
कौन कौन सब ब्राजिल फेस करुछि तो एठु हमें देखिबा ठीक अछि। ब्राजिल होछि पृथ्वी रो 5th लार्जेस्ट कंट्री एवं एटा होछि लार्ज एटा जो साउथ अमेरिका रे एटा होछि सबुठारु बड़ देश। इट इज अ लार्जेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका. Brazil occupy nearly one half the area of South America and borders on 9 of the continents, 11 nations. माने तार चारि पाखरे 11टा देश अछंती एवं ए जो साउथ अमेरिका रो पाखापाखी 9टा कोन देश सहित माने पाखापाखी राज्य मान सहित तार संपर्क अछि। पाखापाखी 80% पॉपुलेशन सिटी रे रहंती बा टाउन रे रहंती आउ ता सहित ए देशटा होछि बहुल परिमाण रे अर्बनाइज्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड इन जो लैटिन अमेरिका रे Sao Paulo or Rio de Janeiro are among the 10 largest cities in the world. तो एठी देखियो को मिले ताप सहित ब्राजिल होछि अमेजन रीजन रे अछि एवं which has some of the world most extensive wilderness area are sparsely inhabited by indigenous people still in the process of coming into contact with the modern world. आमे जानि छे अमेजन अबवाहिका रे ए जो किछि दिन तळे निया लागि जायतिला तो से जो निया लागिबार अनेक कारण भी अछि तारो इकोनॉमिक कारण अछि और पॉलिटिकल कारण अछि सेटा को नेचुरल बोली कहा जाय ने एटा होछि आर्टिफिशियल करा जायतिला सेठी कारो आदिवासी मानन को सेटु हटेले जो नेचुरल रिसोर्सेस अमेजन अबवाहिका रे अछि सेटु सेटा कोन एक्सट्रैक्ट करिया हैतंता ए सब तारो माने कोन थिला हिडन एजेंडा थिला ए जो ब्राजिल एरिया रे तो हमें देखिबा एठी तारो जनरल बैकग्राउंड ता एठी ब्राजिल रो जो क्लाइमेटिक बा नेचर बा तार रेस बा तार एथनिक एठी हम देखिबा ब्राजिल रो पॉपुलेशन मेनली ड्रॉज ऑन नेटिव अमेरिकन अफ्रीकन यूरोपियन रूट्स एंड सक्सेसिव वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स सो एठी नेटिव अमेरिकन अछंती लोकल अमेरिकन अछंती अफ्रीकन जाईकी सेठी अछंती यूरोपियन अछंती एवं अनेको इमिग्रेंट्स अछंती जे कि सेठी से देशटा को कोन से देश रे बसवास करूछंती मोस्टली एशिया एवं यूरोप रो लोक सेठी देखियो मिले एवं मिक्स रेशियल ग्रुप मध्ये सेठी देखियो मिले लिविंग कंडीशन ब्राजिल रो होची 170 मिलियन पीपल कोन कहबा मिलियंस पीपल very dramatically and income disparity are significant not only across regions but also between metropolitan centers non-metropolitan urban centers and rural areas ये जो इनकम इनक्वालिटी का सब जगह रे अछि आपण माने जदि समय पाइले थॉमस पिकेटी रो द कैपिटल पढिबे हला सेठी पाइबे माने वर्ल्ड सारा थॉमस पिकेटी द कैपिटल बोली जे बहिरना सेठी वर्ल्ड रो सब देश रे कोठी केमिति माने इनक्वालिटी ता अछि तो इनक्वालिटी ता सब देश रे देखियो मिले आइदर इट इज रिच और इट इज पुअर कंट्री तो ये ब्राजिल रे मध्ये सेटा देखियो को मिलिथिला पीपल एंड हिस्ट्री इन ब्राजिल एटा कहा जाय ना within an estimated 150 million inhabitants Brazil has the largest population in Latin America रे एटा रो सबठारो लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहबा देश which ranks 6th in the world. Taro rank hochi world रे 6th population wise. The majority of them live in the Central Asia, which includes industrial cities of the Sao Paulo, Rio de Janeiro, and Belo Horizonte. ये सब urban sector रे ब्राजिल रो एमाने सब रहंती जोटा कि urban growth has been rapid 1991 रे 75% the total population थिला So rapid growth has aided economic development, but also has created serious social, environmental, and political problems for the major cities. So urban cities मानन करे कौन देखा गला ना दो rapid economy अच्छी किंतु अन्य problem गुड़ा को कौन देखा दिला ना social problem देखा गला, environmental problem देखा गला, political problem देखा गला ना so ये जो four major groups अछंती सेठी जो माने कि ब्राजिल रो पॉपुलेशन बोली को आरे से माने अछंती पोर्तुगीज हु कोलोनाइज द एरिया इन द 16th सेंचुरी तापर अफ्रीकान्स ब्रॉट टू ब्राजिल एज स्लेव्स
तो इस अफ्रीकन मानन को अन्य माने नहीं कि बोले ना स्लेव आकार में नहीं कि various other Europeans, Middle Easterns, and Asian immigrants groups who have settled in Brazil since the mid 19th century, and indigenous people of Tupi and Guarani language stock. तो ऐसी देखा जाए जो indigenous people अଛନ୍ତି, sorry, indigenous people ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଟୁପି ଏବଂ ଗୌରାଣୀ ବୋଲି କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଲୋକ. Intermarriage between the Portuguese and indigenous people or slaves was common. So ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କସ୍ମୋପଲିଟାନ ଦେଶ ଯୋଉଠି କି ମାନେ ସେତେଟା କଳା ଘୋଡ଼ା ଭାବେ ନଥାଏ, ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା इंटरमैरिज सिस्टम का बहुत देखा मिले. पोर्तुगीज जेहेतु सेठी रही तो जो नेटिव लोक भल संपर्क अच्छी मैरिज ऑल्सो टेक प्लेस. So from 1875 to 1960 about 5 million Europeans immigrated to Brazil. तो यूरोप रु एते लोक सब जाउछन्ती ता माने किछि ना किछि से देश भलो अछि होय तो सेठी पय होय तो लोक सेठी को आते. Indigenous full-blooded Indians located mainly in the northern and western border regions and the upper Amazon basin constitute less than 1%. So indigenous full-blooded Indians person सेठी तो से माने 1% बोली कहा जाए. तो एठी ब्राजिल रे होछि कोन कोना पोर्तुगीज कहा जाए एवं अप्रोक्सीमेटली 80% लोक कौन कहते ना रोमान कैथलिक रिलीजन होछि 80% माने रोमान कैथलिक एवं अदर जो माने अछन प्रोटेस्टेंट आउ अन्य लोक माने अन्य रिलीजन रो लोक माने. ब्राजिल was claimed for Portugal in 1500 by Pedro Alvarez Cabral. It was ruled from Lisbon as a colony until 1808. तो इसको माने सब तारा हिस्ट्री एते हिस्ट्री ताकू माने माइनस कर दोछि. एठी हमें देखिबा तारा इकोनॉमिक सिस्टम को हम जानि परिबे ना से देश रे कोन अछि ना. Brazil economy was characterized by a succession of cycles, each of them based on the exploitation of single export commodity, timber. तो जेहेतु अमेजन से एरिया अछि तो अमेजन एरिया अछि माने निश्चय तार जो टिम्बर बा जो वुड्स अछि सेटा क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल वर्क्स ऑल आई मीन इंडस्ट्री रे दरकार अछि वुड्स, शिप बिल्डिंग रे दरकार अछि, घर तयारी रे दरकार अछि, कागज तयारी रे दरकार अछि. सो दैट इज व्हाई तांगर मेजर जो एक्सपोर्ट कॉलेज सेटा होछि टिम्बर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ कोलोनाइजेशन. सुगर कैन तांकर आउ गोटे बड़ बिजनेस जेटाकि सुगर मिल सब अच्छी ता सहित तांकर जो माइनिंग सेक्टर अच्छी नेचुरल रिसोर्सेस भितर गोल्ड और सिल्वर तक देखा मिले एवं डायमंड्स और एमरल्ड्स जेम्स ये सब 18th सेंचुरी गोटे बहुत परिमाण देखा मिलता. कॉफी हूँ अनादर तांकर जो इकोनॉमी सपोर्ट करुच्ची ब्राजिलियन मान.
ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମାଜନ୍ ଆଗରେ ହୋଟେଲ ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ନୂଆ କଲରଟି। हेलो 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 ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ବୋଧେ କଟିଗଲେ ଇଏରୁ। ହ୍ୟାଲୋ हाँ बरा हेलो କଟିଗଲେ ସାର୍ ବୋଧେ ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ କରିଦେବୁ ହେଲା।
MSO Programme. ठीक अच्छे खान कुछ नहीं बेसिकली Enter, expand, enter, stop recording, right, press up or down arrow, enter, stop recording.